Hello students, welcome to Scholar IAS, your one-stop solution for UPSC preparation. Students, my name is Anubhav Sir and I'm your mentor at Scholar IAS to help you realize your dream of becoming an IAS officer. Students, at Scholar IAS, we often try to come up with such modules, such products which can actually help you in terms of your preparation. Here, again, we have come up with a very important session, that is understanding how exactly should we go about in terms of writing effectively for ethics paper. Ethics paper GS4 is a very important part of clearing civil services. वैसे तो 250 मार्क्स का है, बट स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे टॉपर्स के मार्क्स, अगर आप देखेंगे उन कैंडिडेट्स के मार्क्स जो सिलेक्ट हो रहे हैं, a pattern which is very visible is the fact that people who are scoring very well in their essay, ethics, and optional are the people who are able to secure the rank. GS 1 to 3 में आप जितने भी अच्छे हो जाएं, beyond a certain point, UPSC is not awarding very high marks. कहने का मतलब ये है that it is very necessary for you to get very good marks in ethics. When we talk about getting good marks in ethics, what is very important is for us to write our answers in a very effective manner. Or this session is about that. We will be having more such sessions of this kind where we will be discussing previous year questions of ethics and other means examination, and we will be discussing how best a candidate could have attempted it. इस सबको ध्यान में रखते हुए, let me just share my screen with you guys. Fine. So students, first and foremost, मैं आपको ये कहना चाहूँगा that we'll actually be discussing So first and foremost, students, what I'll be doing is to help you out in terms of helping you in how exactly you need to go about in terms of writing answers. I'll be taking questions from next year, from or rather previous year questions. Yes. Okay. So we'll be starting from the first question here. आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आप इसमें डालते रहिए. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. आपके सारे डाउट्स बीट विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं. Apart from it also, if you have any doubts with respect to preparation for civil services, you let me know. Fine. तो अब हम start करते हैं. The first question that we have, and this is a question that was asked in 2019 UPSC mains, right? What's the question? The question is pretty straightforward. What do you understand by the term public servant? That is the first part. And second, reflect on the expected role of a public servant. And what exactly do we need to keep in mind? That we have to answer both these parts in about 150 words, right? Now, let's try to understand it. All ethics, my students, something which is very important is that you try to justify your answer with the use of values. Values को use करते हुए आप अपने आंसर को कैसे construct करते हैं will be the key in writing effective answers in ethics GS4, right? So what do you understand by public servant is the first thing that we need to answer. क्या है public servant? सबसे पहले आप common sense से सोचिए. A public servant is an individual who is in the service of the people. सीधी सी बात है, a public servant needs to be an individual जो service में है people के, right? But when you're writing an answer, it cannot be that simple. Essentially, हमें लिखना क्या है? That a public servant is a person who's in the service of the people, and a public servant can be a state actor or a non-state actor. What are state actors and non-state actors? State actors are people who are agents of state. They can be a minister. They can be an MLA, MP. By minister, I mean all ministers. That includes prime minister also. It can also be a public servant that we say as bureaucrats. What do we understand by non-state actors? Non-state actors who are in the service of the people. It can be NGOs. It can be civil society, etc. So how do we construct our answer? First and foremost, we write that a public servant is an individual who is in the service of the people. Then we mention
A public servant may be a state actor like a minister, prime minister, home minister, chief minister, etc., or an MP, MLA, that is an elected representative, or for that matter, civil servants or bureaucrats who are working as agents of these ministers. Apart from it, public servant can also be non-state actors, that is NGO, civil society. Idea is that you are also mentioning the examples in order to make the point that you are trying to say. I hope this point is clear. यहाँ तक तो बात हुई एक सिंपल तरीके से पब्लिक सर्वेंट की. Then the second part is what exactly is the role expected out of a public servant? What is the role that is expected out of a public servant is the second thing that we need to find an answer for. Students, इसका आंसर लिखने से पहले you would first need to understand the concept that will help you in order to construct, articulate what we need to write. देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसी भी कंट्री की, किसी भी नेशन की, essentially we are trying to talk about a society, Indian society, society of United States of America, society of let's say Pakistan, Sri Lanka, China, right? These all are actually societies. And in these societies, there are certain values that they cherish, right? Among these values, there are certain values which we call as democratic values. What are these democratic values? These democratic values can be freedom, they can be liberty, they can be equality, they can be justice, etc. So any society thrives to attain certain values. These values also entail certain democratic values such as freedom, liberty, equality, justice. In order to attain these values, in order to realize these values, society needs a body which can help them to execute such policies which are predicated on freedom, liberty, equality, justice. सोसाइटी चाहती है कि हमारे समाज में वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो जिसकी वजह से फ्रीडम है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है. इन ऑर्डर टू अचीव दीज वैल्यूज सोसाइटी वांट्स कि कोई एक ऐसी बॉडी हो जो उस तरह की पॉलिसीज बनाए जिस पॉलिसीज के इफेक्ट से फ्रीडम आ जाए, लिबर्टी आ जाए, इक्वालिटी आ जाए. ये बॉडी क्या होती है? वी नो इट इज स्टेट. स्टेट में क्या आ जाता है? हमने पॉलिटी में पढ़ा है. स्टेट में आ जाता है एसेंशियली जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर वो पॉलिसीज बनाता है जिसकी वजह से हम इन गोल्स को पा सके, जैसे हमने देखा है डीपीएसपी में भी दिया हुआ है. एग्जीक्यूटिव इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, बी द ब्यूरोक्रेट्स और फॉर दैट मैटर द मिनिस्टर्स. Judiciary is the custodian of these democratic values in the sense that whenever legislature or executive in their functioning are acting in a manner in which these values are getting circumvented or are getting compromised, judiciary will step in. As such, one can argue they are the custodian of justice. They try to protect these values. अब अगर हमने ये समझ लिया कि एक सोसाइटी है जिसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज चाहिए, इस डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए स्टेट चाहिए, हमने स्टेट के अलग अलग ऑर्गन्स भी बना दिए. अब इन ऑर्गन्स में वी नीड सर्टेन एजेंट्स हु कैन एक्चुअली डू द जॉब ऑफ स्टेट, डू द जॉब व्हिच सोसाइटी वांट्स देम टू डू. वो कौन होंगे? वो होंगे जुडिशरी में जुडिशियल ऑफिसर्स, जजेस, लेजिस्लेचर में एमपी, एमएलए, एग्जीक्यूटिव में आपकी गवर्नमेंट दैट इज मिनिस्टर्स एंड ऑफ कोर्स पब्लिक सर्वेंट्स. सो व्हाट एग्जैक्टली एम आई ट्राइंग टू से? दैट पब्लिक सर्वेंट्स आर दोज एजेंट्स which are acting as tools, as instruments of state in order to realize certain democratic values, certain democratic goals which has been endowed to them by the society. आई होप आपको समझ में आया बट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से. और अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट आ रहा है, राइट? मैं आपके कमेंट्स को भी साथ ही साथ देखता रह रहा हूं ताकि हम लोग आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए. तो हमने एसेंशियली समझा क्या? हमने ये समझा
कि इस क्वेश्चन को अगर मैं ठीक से आंसर करना है, दैट इज रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट, द बेस्ट वे टू आंसर इज we begin our answer by saying that every society seeks to achieve certain democratic values, certain democratic goals, which entails realizing values of freedom, liberty, equality, justice, etc. In order to get to these values, society forms a body which is called state, bracket में लिख दीजिए judiciary, legislature, executive. State is made custodian of being a body which must realize these goals. In order for state to function, it would require certain agents. These agents will act as instruments in the hands of state. As such, these agents who are working for the state are actually working for the society. Thus, one can argue these are people who are public servant. A public servant is expected to realize democratic goals. I hope आपको समझ में आया how exactly have we answered these two things. पहले हमने एक बेसिक चीज बताई, हमने एक बेसिक कंसेप्ट बताया. क्या बताया? That the basic principle, what are the basic principle, sorry, वो चीज हो गया था. हमने बहुत सिंपल चीज बताई. What do you understand by public servant? A public servant is a person who is in work, who is in service of the people. He can be or she can be a state actor or a non-state actor. State actor, non-state actor की definition दे दी. फिर हमने ये बताया कि एक सोसाइटी है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अचीव करना चाहती है, जिसके लिए वो स्टेट को कस्टोडियन बनाती है. स्टेट को काम करने के लिए ऐसे एजेंट्स चाहिए, और ये एजेंट्स होते हैं पब्लिक सर्वेंट्स, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर सर्विंग द सोसाइटी व्हिच इज मेड अप ऑफ पीपल. स्टूडेंट्स, इन दिस आंसर इफ यू नोटिस व्हाट एग्जैक्टली हैव वी डन, हम लोगों ने वैल्यूज को यूज किया है, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को यूज किया है, हम लोगों ने रियल टाइम एग्जांपल्स को यूज किया है in order to make a point. And when we look at the answer copies of the people who are getting very good marks, what do we see? That this is how they are able to score marks. This is how you are able to make your answer to stand out. I hope you understand this answer completely. और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए. फाइन, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ? This again is a question that was asked in 2019 means examination of UPSC. This is generally a question which has been asked in different ways in UPSC exams or state PSC exams across India. ये एक ऐसा सवाल है जिसको घुमा घुमा के चाहे UPSC हो चाहे स्टेट सर्विसेज हो वो पूछते ही रहते हैं. The question is, what are the basic principles of public life? And then it also asks, illustrate any three of these with suitable examples. आपको एक तरफ बताना है कौन से वो बेसिक प्रिंसिपल्स है, दूसरी तरफ आपको बताना है एनी थ्री ऑफ दीज, किसी को भी तीन आप चुन लीजिए और उसको समझा दीजिए. Students, the most effective way in which you can answer it, and any good student who has studied it, is to either rely on Nolan report. अगर आपने एथिक्स की तैयारी की है, नोलन रिपोर्ट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, या फिर वैल्यूज व्हिच ARC2 हैज रिकमेंडेड. ARC are those set of reports which has been formed by a body which was made by the government, and this body has given a number of reports which essentially aims at reforming our administrative system. One of these reports is the fourth report, that is ethics in administration, which actually speaks about certain values which ARC has recommended. चाहे नोलन कमिटी की रिपोर्ट्स को आप मेंशन करें या ARC2 की वैल्यूज को आप मेंशन करें, यू विल एक्चुअली बी आंसरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नोलन कमिटी की हम जानते हैं कौन कौन सी वैल्यूज है. पहली है सेल्फलेसनेस. Right? What is selflessness? That you will not care about yourself and you'll always keep your duty above yourself. Doing what is morally right will be more important than you than to think about self-interest. That is what we mean by selflessness. Second value क्या बताई है? Objectivity. What is objectivity? That a person will look at the issue from standpoint of facts. A person will look at issues from standpoint of understanding the laws, the various rules and everything that is in place. Objectivity thus requires one to have an idea of prudence and his ability to not get swayed away by emotions.
ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास कम है, एक पब्लिक सर्वेंट के पास कम है. इफ अ पब्लिक सर्वेंट नीड्स टू एक्ट इन अ फेयर मैनर, उसके लिए ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके बाद आती है इंटेग्रिटी, अनदर इंपॉर्टेंट वैल्यू जो नोलन कमेटी बताती है. व्हाट इज इंटेग्रिटी? Integrity is a value of a public servant in which he essentially subscribes to certain set of values and post subscription he will not compromise of them. For example, एक इंडिविजुअल ने बोला कि भाई there are certain values to which I subscribe to. जैसे मैंने ऑनेस्टी को मैं सब्सक्राइब करता हूँ, लेट्स से मैं इक्वालिटी ऐसा वैल्यू को मानता हूँ, लेट्स से मैं फ्रीडम ऐसा वैल्यू को मानता हूँ. एक बार मैंने इन वैल्यूज को सब्सक्राइब कर लिया, अब ये मेरी पार्ट ऑफ इंटेग्रिटी हो गई. सो इंटेग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पब्लिक सर्वेंट. व्हाई? For the very simple reason that a public servant is supposed to work with a certain set of public service centric values like accountability, transparency, like openness, like public sympathy and compassion, so on and so forth. And in order for the public servant to be consistent in these values, something that is very important is for that person to have integrity. अगर एक पब्लिक सर्वेंट के पास इंटेग्रिटी है, अ पब्लिक सर्वेंट विल बी एबल टू वॉक ऑन दी वैल्यूज दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ पब्लिक सर्वेंट. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, कहने का मतलब है. सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी के बाद कौन सी वैल्यूज है? अकाउंटेबिलिटी. ये भी एक नोलन कमेटी ने बताई थी. अकाउंटेबिलिटी इज व्हाट वी कॉल एज आंसरेबिलिटी, जवाबदेही. If a public servant is working for the people, what exactly is he doing? He is actually using the public resources in order to govern. In his idea of governance, what exactly does a public servant need to do? He would need to distribute public goods and services. Public goods and services क्या आपने without corruption और in an efficient manner किया है, नहीं किया है, उसके लिए आपको accountability देनी पड़ेगी. हमने, अगर आपने ethics को पढ़ा है, we have dealt with accountability in a very deep manner. Horizontal accountability, vertical accountability, accountability of a public servant towards the political executive, accountability of a public servant directly to the people, चाहे RTI हो, चाहे citizen charter हो. This again is a very important value which Nolan Committee has recommended. Then openness. Openness means that a public servant in his functioning thrives to be transparent in the manner in which he functions. He tries to keep the books open for people to see and have faith and confidence in the functioning of the people. In RTI, there is a provision, students, which says that all public bodies, all public offices must thrive to make its books, its data open as much as possible. चाहे वो डिजिटल मीडियम के थ्रू हो, चाहे वो नोटिस बोर्ड के थ्रू हो, ज्यादा से ज्यादा इट इज एक्सपेक्टेड कि पब्लिक बॉडीज डेटा अपनी फंक्शनिंग के तरीके को पब्लिक के सामने रखते रहे. क्यों? इन ऑर्डर टू प्रमोट ओपननेस इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग. ओपननेस होगा क्या? करप्शन नहीं होगा, लोगों का फेथ आएगा, लोग समझ पाएंगे, राइट? इसके बाद क्या बताया? ऑनेस्टी. ऑनेस्टी इज समथिंग व्हिच इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And lastly, leadership. Why leadership? Students, if you see, a public servant is in a position of power. But this position of power, this position of authority has been endowed to him for a reason. The reason is to work towards the welfare of the people. In this regard, essentially, he would also need to act as a leader, leader of his team, a person who's able to influence people in order to adopt good government policies. For example, अगर आधार स्कीम ड्राइव चल रहा है, he would need to encourage people to get enrolled to आधार. अगर मिड डे मील स्कीम चल रहा है, या फिर सर्व शिक्षा अभियान है, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, इन सब पे it is necessary that he is able to influence people, he is able to persuade people in order to be a part of the government initiated policies जो उनकी भलाई के लिए किया गया है. In ethics paper, there is a chapter with respect to persuasion and social influence, which is deeply connected with the value of leadership. So students, with respect to the first part, what is the best way in which you can answer it? You would say that when we talk about basic principles of public life, essentially we are trying to talk about those principles by which
a public servant is able to deliver on democratic goals as well as on governance based on welfare. Nolan Committee highlights selflessness, objectivity, integrity, accountability, openness, honesty, leadership to be those principles which a public servant would need to work on in order to deliver his function, his role in an effective manner. नोलन कमिटी को मेंशन कर देना will make your answer better. Directly उसने नहीं पूछा नोलन कमिटी पे. But if you write Nolan committee and if there's another student who hasn't written Nolan committee but might have written the same points, आपको ज़्यादा marks मिल जाएंगे because you are giving a reason to the examiner to give you one extra mark because of the point that you have shown. देखिए ये exam ऐसा है यहाँ पे it is very necessary for you to show off your knowledge. जो भी connected issue है, जो भी connected point है, उसको जरूर mention कीजिए. Competitive exam है, हर half mark, एक mark add up होता है. What is the second part saying? Illustrate any three of these with suitable examples. कोई भी तीन आपको इसमें से चुनने हैं. I have explained to you all. आप कोई भी तीन चुन सकते हैं. And you need to give certain examples by which you are able to make your point. Now, students, in this regard, I would want to give you a very important tip. Indeed, you can choose any three values that you want. Values on which you have good examples, values on which you have good kind of information. But a good student will actually be prepared for this question in advance. अगर आप सोचे इस क्वेश्चन ने आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि कोई भी तीन आप चुन लीजिए, तो मेरा सुझाव आपको ये रहेगा, मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप वो तीन वैल्यूज चुने जो एक पब्लिक सर्वेंट के सारी वैल्यूज को कैप्चर कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल, आप चाहेंगे एक पब्लिक सर्वेंट में एक ऐसी वैल्यू हो जिसको हम ऑनेस्टी, सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी इससे जोड़ सके. सो समथिंग दैट परटेन्स टू ऑनेस्टी मस्ट बी देयर, क्योंकि वी कैन नॉट एंडो the authority of such an enormous kind जहाँ public resources, public funds उसके हाथ में आ जाते हैं to control to a person who is not honest, who is not loyal, right? There should be one value which must be reflective of intelligence of a person. Why? Because a public servant will indeed be dealing with public funds, public resources, intelligently काम करे, efficiently काम करे. Apart from it, you would also want a public servant, more so for the developing country, to be acting in a manner in which he works towards the welfare of the people, right? And welfare में जरूरी क्या हो जाता है? Values like compassion, empathy, so on and so forth. Thus, if you have prepared well for the examination, you essentially would be targeting these three aspects of the values that you would entail, that values that you will be writing. What all will be these values? अगर आप honesty की बात करें, the best value can either be honesty or for that matter a value that I call as beneficence. What is beneficence? कोई नहीं लिख के आता है student, but it's a very very important value. What it means is moral obligation of a person to do good. This moral obligation increases if a person is in a position of influence. अगर आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी है स्टूडेंट्स, उसमें एक डायलॉग था, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू व्हाट, टू डू गुड फॉर द पीपल. तो बेनिफिसेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है पब्लिक सर्वेंट में फॉर टू रीजंस. पहला, एक पब्लिक सर्वेंट इज इन द पोजीशन ऑफ पावर. अ पब्लिक सर्वेंट हैज कंट्रोल ओवर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, has control over local goods and services, so on and so forth. A position of power है, तो एक person should act in a way in which he is acting for the welfare of the people. Beneficence as a value will ensure it. And second is the knowledge. अगर एक किसी को भी public servant बनना है, it cannot be कि कोई भी बन जाएगा. You would need to attain a lot of knowledge. If you are a person who is in a position of high knowledge, you again are a person who needs to work for the welfare of the people. एक कहावत है that only way in which good can thrive, or only way in which evil can thrive is when good men do nothing. Only way in which only way in which evil can prevail is when good men chose to do nothing. असत्य तभी जीत सकता है जब सत्यवान लोग कुछ ना करें. कहने का मतलब यह है, beneficence is a value that must be there in a public servant. Why? क्योंकि वो एक position of power authority में है, और दूसरा because he has a lot of knowledge.
because he has a lot of knowledge is why you would expect that person to take those decisions based on this knowledge which is in the welfare of the people. उसी तरीके से जब हमने ऑनेस्टी की बात कर दी, फिर इंटेलिजेंस में एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसको ज़्यादा वैल्यू है, तो या तो इंटेग्रिटी आप यूज कर सकते हैं या फिर आप प्रूडेंस यूज कर सकते हैं। इंटेग्रिटी तो मैंने आपको अभी समझा दी, प्रूडेंस क्या है? Prudence is the sagacity required on the part of a person in order to take decisions. इसको अगर आसान भाषा में बताए, public servant is in a position where daily he would need to take decisions with respect to implementation of administrative policies, decision which can be as big as imposition of curfew, decisions with respect to local administration. ये सारे ही डिसीजंस में ही वुड नीड टू थिंक ऑफ अ मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, सोशल इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, राइट? इसमें एक एक व्यक्ति जिसके पास प्रूडेंस है, पर्सन हु हैज प्रूडेंस विथ हिम, उसके पास विवेक है, दैट पर्सन विल एक्चुअली यूज every aspect of his mental faculties in order to take the right decision. एक सिंपल एग्जांपल में बताऊं, that demonetization is being criticized for it having lack of prudence. प्रूडेंस की कमी थी, चाहे वो रघुराम राजन ने बताई हो, चाहे वो जो हमारे बाद में गवर्नर आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने जो बात बताई हो, उन्होंने क्या बताया था? इफेक्टिवनेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज वेरी लेस। व्हाई वाज इट लेस? क्योंकि हर फैक्टर्स को सोचा नहीं गया था व्हाइल इंप्लीमेंटिंग डिमोनेटाइजेशन। Thus, prudence is a value which is required for a public servant to take decisions which can be most efficient and beneficial to the people. उसके अलावा लास्ट वैल्यू जो आपको यूज करनी चाहिए, दैट शुड बी समथिंग दैट मस्ट बी रिलेटेड टू वेलफेयर। तो इट कैन बी कंपैशन, इट कैन बी एम्पैथी। क्यों? For the simple reason that a public servant ultimately works for the people and his prime responsibility is towards the poor of the country, the people who are suffering in the country. As such, a public servant must always strive to work for the poor, must always try to work for the people who are in need. इसलिए empathy, compassion becomes a very necessary value. सो स्टूडेंट्स, इस पूरे आंसर में हमने क्या समझा? पहले तो हमने बेसिक प्रिंसिपल समझ लिए, जहाँ हमने कहा कि अगर आप नोलन या ARC2 के जो वैल्यूज प्रिस्क्राइब्ड है वो बता दें। हमने एक एक वैल्यू जो नोलन कमेटी ने प्रिस्क्राइब की है उसको समझा। हमने और क्या समझा? हमने वो तीन वैल्यूज किस तरह से चुनना है इसको समझा। हाउ एग्जैक्टली शुड वी बी चूजिंग द थ्री वैल्यूज? वी अंडरस्टूड दैट टू। एंड नाउ वी जस्ट नीड टू राइट सम एग्जांपल्स। वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कंपैशन इज व्हाट? is Armstrong Palmy, इनके बारे में गूगल सर्च कीजिएगा। ही इज एन IAS ऑफिसर who actually worked for the people in a manner, जहाँ उन्होंने रोड बनवा दी थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इनके डिस्ट्रिक्ट में। read about him. Then when we talk about prudence, you can also take the example of Shubhra Saxena. She again is an IAS officer. She has actually developed a mechanism of e-tendering that again helped a lot of people in terms of ensuring greater accountability and transparency. अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी हो तो वहाँ पे e-tendering वाले के बारे में थोड़ा सा दिखाया था। बट बी दैट एसेट में जो e-tendering था उसको इन्होंने पुश किया था, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से फेयरनेस इन टेंडर एलोकेशन वो गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में आ गया था। सो दीज आर सम एग्जांपल्स दैट यू कैन यूज, राइट? इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, आप पूछते रहिए इसमें, राइट? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Effective utilization of public funds is crucial to meet developmental goals. Critically examine the reasons for underutilization and misutilization of public funds. Students, this question again came in 2019. And we will deal it in a manner in which, of course, we'll take those points which we need to write in this answer, but we'll also be talking about these concepts क्योंकि ये direct UPSC के ethics syllabus में दिए गए हैं, misutilization and underutilization. ये question in itself can act as 3 questions अगर हम इसको डिटेल में समझेंगे, and जो analysis में अभी आपको दूंगा, you'll actually be able to handle any question that can be asked on this topic of misutilization or underutilization of public funds, right?
So students, first and foremost हमको क्या समझना है that what exactly do we mean or rather why exactly is it necessary for us to have effective utilization. अभी इन्होंने दो चीजों की बात की है, अंडर यूटिलाइजेशन की और मिस यूटिलाइजेशन की. व्हाट एग्जैक्टली इज मिस यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन, इसको हम समझेंगे. बट अगर कोई चीज अंडर यूटिलाइज हो रही है, मिस यूटिलाइज हो रही है, सीधी सी बात है, देयर मस्ट बी अ वे इन व्हिच वी कैन हैव इफेक्टिव यूटिलाइजेशन. सवाल ये आता है व्हाई एग्जैक्टली इज इट नेसेसरी फॉर अस टू हैव इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, और बहुत सिंपल से इसकी पॉइंट्स है. पहला पॉइंट क्या है? Because when we talk about developing countries, the resources are scarce, right? Just a second. Resources are scarce, right? Because the resources are scarce, so what happens? We need to ensure that we are able to make most of it. In fact, this is a quality that we expect from a public servant, which we call as resourcefulness. जो भी resources है, उसका maximum utilization क्या कर पाए. In a developing country, there are different developmental goals, but the resources in order to attain those developmental goals are very limited. As such, whatever resources that are there in the hands of state, that resources needs to be effectively utilized. So that's the first point that you need to keep in mind. In the developing countries, scarce resources की वजह से हमें effective utilization चाहिए. दूसरा point क्या है जिसमें हमें चाहिए? This again is a deeper point जो आप लोगों ने economy में पढ़ा होगा, that when we talk about development, we are not only talking about growth. Development can also be with respect to certain things where profit cannot be there. There is no profit maximization. That is, आप पैसा spend तो कर रहे हो, but you are not expecting anything in return with respect to profit. एक simple सी अगर मैं बात बताऊं, कोल इंडिया है, right? या फिर गवर्नमेंट की कोई और बॉडी है, तो वहां पे क्या होता है, या फिर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी ले लो. दैट एसेंशियली व्हाट वी आर डूइंग, we are trying to find a way in which we invest some money. ONGC भी आप एग्जांपल जैसे PSUs है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट पैसा लगाती है, इसमें प्रॉफिट मिलता है, और जब प्रॉफिट मिलता है इसको अगेन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, so on so forth. But when we talk about developmental goals, we are also talking about human development. By human development, we mean what? We mean development of children. इसमें न्यूट्रिशन आ जाता है, इसमें एजुकेशन आ जाता है, राइट? We mean development of a woman, चाहे वो maternity care हो, मातृत्व योजना अगर आपने गवर्नमेंट पॉलिसी सोशल इशू में पढ़ा हो, or for that matter it can be with respect to nutrition of women, something that we are seeing stunted children or stunted men in India, how what exactly needs to be done. It can also be with respect to skill development. Skill development again is not something that needs to be done only for the sake of getting money. It is because once you skill your people, the people can actually take higher order economic activity, जिसकी वजह से देश बेहतर होगा. All these activities that is linked to human development will not fetch you profit. Thus, every penny that you are spending here needs to be spent in a prudent manner. It needs to be spent in a manner in which you are able to ensure maximum development for children, women, deprived classes, SC, ST, so on and so forth. So you understand these are the two most important reasons why effective utilization of funds is necessary. This is not that has been asked in the exam, but this will help you to understand this issue in a more in a better manner, right? फिर आता है what are the main reasons for underutilization of funds. So students, there is something called underutilization of funds, there is something called misutilization of funds. इसके simple अंतर को समझ लीजिए. Underutilization of funds simply means that we have funds to do something, but we aren't able to do it. We aren't able to achieve the goals with it. Why exactly is that happening? The reason is because we haven't put up a way in which we can actually utilize the funds in an effective manner. In fact, we can utilize the funds. तो हमने funds तो allocate कर दिए, but वो जो fund है वो use ही नहीं हो पा रहा है. That is what we call as underutilization. Then we have misutilization. Misutilization can be of two types. One is of course corruption, कि आपका पैसा तो था for the welfare of the people, but you have engaged yourself in corrupt activities, तो misutilize हो गया.
Second can also be in maladministration. By maladministration, I mean poor policy implementation, leakages, so on and so forth. दोनों को ही हम एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं what all are the reasons for underutilization of funds, right? सबसे पहले हम समझेंगे underutilization of funds, right? So what all are these? सबसे पहले तो आता है जिसको प्लानिंग कमीशन ने भी हाईलाइट किया है, नीति आयोग ने भी हाईलाइट किया है. अगर आपने पिछले 2 साल के इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़े वहां पे भी हाईलाइट किया है कि अंडर यूटिलाइजेशन कब होता है, जब जब सेंटर अपने फंड्स को लिंक कर देता है स्टेट स्पेंडिंग से. थोड़ा टेक्निकल है, आपने इकोनॉमी में बजट वगैरह पढ़ा है तो आप इस बात को समझ जाएंगे that there are several schemes where center allocates certain funds that needs to be given to state in order to implement a policy. सेंटर ने ये बोला कि इस पॉलिसी में हम 50-50 शेयरिंग रखेंगे. मतलब अगर स्टेट आप 50 रुपीज स्पेंड करते हो तो विल गिव यू 50 मोर टू स्पेंड इट मोर ऑन दैट सेम पॉलिसी. अब सेंटर क्या करता है, उसने रख दिया कि वी आर गिविंग 100 CR. दैट इज अगर आपने 100 करोड़ रुपए खर्च किए स्टेट तो हम आपको 100 करोड़ और देंगे एंड देन यू कैन स्पेंड 200 करोड़. लेकिन स्टेट के पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो 100 करोड़ खर्च कर पाए. वो क्या करता है, वो 50 CR ही कर पाता है स्टेट. और सेंटर बोलता है बिल्कुल ठीक है, विल गिव यू 50 CR. समझने की बात क्या थी, जो सेंटर था उसने एक पॉलिसी के लिए 100 CR रखा था. उसने ये बोल दिया स्टेट जितना स्पेंड करेगा हम 50-50 शेयरिंग में उतना ही पैसा उनको दे देंगे. इट इज लिंक्ड विद द स्टेट फंड. बट हुआ क्या, स्टेट ही 50 CR कर पाया, तो सेंटर ने 50 CR तो रिलीज कर दिए बट उनके बाकी के 50 CR अंडर यूटिलाइज रह गए. दिस इज a reason which has been quoted by both planning commission when it was there, then Niti Aayog has also said the same, and then economic survey has also pointed the same thing in the last 2 years. I hope you understand the first point very clearly. Then there is one more reason for this to happen. Why? There hasn't been development of proper administrative structure to spend and utilize the fund. What exactly do we mean by this? Students, Sarkar ne bola, and I'll use an example to explain it to you. Government said that we need to have a policy which can help in protecting women against crimes that is happening against women. जैसे हमें पता है कि अगर कोई women assault हो रहा है या उनके कोई rape attempt कर रहा है, we need to have certain ways in which certain safeguards can be put in place by which we are able to save the woman. Crime against women को हम कम कर सके. उसके लिए सरकार ने बना दिया निर्भया फंड. In Nirbhaya Fund, what exactly government did? Government put in some money. हर साल हो रहा है. And every year what we see that the money is not getting spent at all. Why exactly is it not doing? Because there is no administrative machinery to actually spend this money. In the same way, there is a policy called, I think, Smart India. If I'm not wrong, let me just say. So yeah, Smart City Project. So there is a policy of government called Smart Cities Project, which will again exemplify the point that I'm trying to make. In 2016 budget, for Smart City Project, 8,000 crore was allocated by the government. 8,000 CR, right? And you know how much money was actually spent from this fund? Only 167 CR. कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट allocated 8,000 CR with respect to smart city project. Smart city project था क्या? Basically, we will try to bring smart features in the metro cities of India. We will try to make the non-smart cities into smart cities. But how exactly will it get done? Who are the engineers? Who would need to implement it? How exactly the planning will be done? What exactly will be the planning for a tier 2 city or a tier 1 city? These are certain specifics that requires an administrative system to be in place which can take call on these aspects, and this is missing, is why we see underutilization of funds. हमने एक निर्भया स्कीम का देखा,
एग्जाम्पल, और हमने देखा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का। दोनों ही एग्जाम्पल आर एब्सोल्युटली एप्ट फॉर अंडर यूटिलाइजेशन, राइट? Apart from these two, there are other reasons also. What are these reasons? The third reason is, just a second, guys. The third reason is just a technical issue here, guys. Let me just again come back. So we were discussing about the underutilization. There is one more reason for it, and the third reason is that channels and modes in which we can promote civic participation has not been strengthened. Civic participation has not been strengthened. What exactly do we mean by civic participation? Citizen charter, social audit. आप जिसको जितना इन्हें strengthen करेंगे, उतना public will be able to put pressure on the government officials, on the public official to spend the money, right? Then there is a fourth reason. This fourth reason can be clubbed into other reasons. What all are these reasons? पहला है, जो बहुत सारे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे गवर्नमेंट के जो फंड्स है, वो जुडिशियल केसेस में फंसे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक हाईवे बनाने के लिए, ये वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा देखा गया है, हाईवे बनाने के लिए गवर्नमेंट ने से 100 करोड़ एलोकेट किए। जैसे ही उसने हाईवे बनाना चालू किया, इंजीनियर ने, वहां पे किसी ने केस कर दिया दैट दिस इज डूइंग दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दैट रीजन, सो ऑन सो फोर्थ। जिसकी वजह से हो क्या गया कि प्रोजेक्ट रुक गया। प्रोजेक्ट रुक गया, उसकी वजह से जो 100 या 95 सीआर जो भी बचा था वो रुक गया, वो अटक गया। जब तक जुडिशियल केस का वर्डिक्ट नहीं आएगा तब तक वहां काम नहीं हो पाएगा, तब तक जो एलोकेटेड मनी है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। सो दैट्स अगेन अ रीजन which is quoted as underutilization of funds. Apart from it, there is something called outcome budgeting. What is outcome budgeting? Outcome budgeting is a form of budgeting where outcomes are looked upon whenever we try to understand how well the money has been spent, right? इसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे, but outcome budgeting, if it is getting emphasized, our emphasis will not only be on making sure current account deficit या physical deficit कम हो रहा है नहीं हो रहा है, फोकस विल बी कि हमने पॉलिसी के लिए जो पैसे दिए, हम कितना देख रहे हैं उस पॉलिसी का असर। अगर हमने लेट्स से निर्भया फंड में पैसे डाले हैं 200 करोड़, तो आइडिया इज दैट वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन इट्स इंपैक्ट ऑन द आउटकम। आउटकम मीनिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितने कम हुए। दिस इज व्हाट वी मीन बाय आउटकम बजटिंग, राइट? This again, this is the most effective way in which you can answer it. I have actually listed all the most important reasons that you can think of in terms of the reasons for effective for misutilization of, sorry, underutilization of funds. तो हम लोगों ने underutilization of funds के 4-5-6 reasons थे, वो सारे हमने समझ लिए, right? What exactly is the implication of this? Implication of this is that underutilization of funds create a situation on which there is a policy for which we have more resources, and there is a policy which is for which we do not have any resource. तो दोनों तरह की पॉलिसीज फेल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इरिगेशन स्कीम्स के लिए बहुत बार कहा जाता है कि हमारी पॉलिसी इसलिए इफेक्टिव नहीं है क्योंकि देयर इज स्कार्सिटी ऑफ फंड, पैसे की कमी है। ऑन द अदर हैंड, स्कीम लाइक निर्भया और स्मार्ट सिटी वो इसलिए नहीं काम कर रही है क्योंकि अंडर यूटिलाइज हो रहा है। सिचुएशन की आप गंभीरता को समझ रहे हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। Essentially, all we need to do is to take this fund and put it here, but this is not how budgeting works. Because this fund, a corpus of fund has been allocated for this scheme, it is necessary that it gets spent on this scheme. And we have, on the other hand, a scheme which could have been served better with more funds. अंडरयूटिलाइजेशन का ये हमेशा एक बहुत बड़ा implication रहेगा, जिसको आप याद रखिए। This will be also important for your GS paper 2. Exactly same paper, same question आपका GS paper 2 में भी आ सकता है। Then we come to the second part, that is misutilization of funds. What exactly are the reasons for misutilization of funds? Misutilization के बारे में हमने क्या बताया था? There are mainly two broad reasons, and we will actually further understand the reasons in detail. एक तो हो सकता है करप्शन,
कि मिस यूटिलाइज होना मतलब क्या हुआ, द मनी विच वाज सपोज टू बी स्पेंट ऑन समथिंग विच इज लिंक टू अ पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक वेलफेयर, वो करप्ट एक्टिविटीज में चली गई, लीकेज हो गया, राइट। एंड दूसरा होता है इनएफिशिएंट वे ऑफ फंक्शनिंग, कि जो काम लेट्स से एक पॉलिसी आपकी 100 सीआर में हो जानी चाहिए थी, उसमें 500 सीआर खर्च हो गया, बट उसका इफेक्ट नहीं आ पा रहा है ठीक से। I hope you're able to understand the two reasons, and these two reasons are very different. One pertains to corruption, and second pertains to productivity. Productivity मतलब आपका efficient या inefficient कितना है system, right? दोनों को हम समझते हैं और ज़्यादा सारी policies को हम समझते हैं, सारे factors को समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले if we want to understand what are the reasons for underutilization, सबसे पहला तो है जो देखा गया है, that is populist politics. What is populist politics? The government will dole out resources in an imprudent manner for aspects which are not the priority for a well-governed state in order to garner vote. पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की वजह से गवर्नमेंट इस तरह से स्पेंड करती है उन चीजों पे जिस पे जरूरत नहीं थी। A lot of experts believe जो डीजल सब्सिडी पे स्पेंडिंग हो रही थी, that was a way in which rather डीजल सब्सिडी पे जो स्पेंडिंग हो रही थी, that was one of the examples of populist politics which was resulting in a kind of misutilization, क्योंकि हमें सिर्फ वोट चाहिए, हमें एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं देना है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन है करप्शन, समथिंग दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, that when we look at what exactly is something that is eating away the governance of, or the whole idea of good governance is the idea of corruption. We have ministers, we have bureaucrats, we have public servants who are in position of authority, जिसकी वजह से उनके हाथ में पब्लिक फंड्स होते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन पब्लिक फंड्स को स्पेसिफिक वेलफेयर स्कीम्स में खर्च करें, लेकिन वो करप्ट एक्टिविटीज में एंगेज हो जाते हैं। चाहे हम बात करें MPLAD फंड्स का, चाहे हम हर तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें, करप्शन इज समथिंग व्हिच इज रिजल्टिंग इन मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। Then there is the third reason, that is red tapeism. What is red tapeism? Red tapeism essentially means that for anything to get done in a government, there are certain rules that needs to be followed. कभी कभी रूल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, फॉर्म्स इतने ज्यादा आपको भरने पड़ जाते हैं कि जो फंड था जिसके लिए वो काइंड ऑफ बनाया गया था, वो फंड मिस यूटिलाइज हो गया, इन द सेंस कि वो फंड यूज ही नहीं हो पाया ठीक से, राइट। कहने का मतलब ये है कि डिलेड रिलीज होता है, डिलेड रिलीज की वजह से कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मिस यूटिलाइज हो जाता है। एक सिंपल से एग्जांपल ले, अगर मान लीजिए एक पॉलिसी बनाई गई दैट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन 2021, 100 करोड़ रख दिया गया, इतने सारे फॉर्म्स भरने थे, इतने सारे हमको चीजें भरनी थी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया लेट्स से 4 to 5%। तो अब वो एक्सपेंडिचर जो हम लोग 100 करोड़ में जो हम प्रोडक्ट ले सकते थे, अब हमको 105 करोड़ भरने पड़ेंगे। हो क्या गया? इट इज अ वे इन विच फंड्स हैज बीन मिसयूटिलाइज्ड। क्यों? क्योंकि अब आपको ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। एक वायबिलिटी गैप फंडिंग होता है कंसेप्ट इकोनॉमी में, आप उसके बारे में पढ़िएगा, वो एग्जैक्टली इसी के बारे में है कि अब आपके जो फंड्स थे वो इस, क्योंकि फंड एसेंशियली समथिंग फॉर यू टू गेट थिंग्स डन, अगर वो चीज ही एक्सपेंसिव हो गई तो आपने अपने फंड्स को मिस यूटिलाइज किया। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आया, कमेंट्स में डालिए, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू सेपरेटली। देन अनदर रीजन is March rush. What is March rush? This again is a thing that you can see in economy. March rush में क्या होता है कि इंडिया के बजटिंग सिस्टम में we have a process in which a budget is allocated to any government department or a body. This body needs to spend this budget by March end. Why? Because this is how the system works. अब मान लीजिए कि 100 करोड़ allocate हुए थे किसी गवर्नमेंट बॉडी को, डिपार्टमेंट को, बाय द टाइम आपका फेब आ रहा है, उन्होंने देखा कि हमारे 85 करोड़ ही खर्च हुए हैं, they would then in just 1 month try to spend the rest 15-20 crores whatever is left. The reason they do so is because कि अगर उन्होंने अंडर स्पेंड किया, नेक्स्ट टाइम बजटरी एलोकेशन उनको कम मिलेगा। अगर उन्होंने लेट्स से 90 करोड़ से खर्च किया, नेक्स्ट टाइम उनको बजटरी एलोकेशन 90 CR मिलेगा, और वो ये चीज नहीं चाहते।
10 मार्च में ऐसा देखा गया है गवर्नमेंट बॉडीज बहुत एग्रेसिवली पैसे को खर्च कर रही होती है और बहुत बार ये जो एक्सपेंडिचर होता है इट लैक्स प्रूडेंस, राइट. फाइनली, lack of transparency and accountability in government functioning is again a reason. Of course उसका लिंक करप्शन से आप कर सकते हैं, बट बहुत बार करप्ट एक्टिविटीज इसलिए हो रही है क्योंकि देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. फॉर एग्जांपल जब आरटीआई आया बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारे करप्ट एक्टिविटीज एक्सपोज हो गए. आरटीआई वाज एक्चुअली मेंट टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी, जिसका इफेक्ट ये था करप्शन कम हो गया. मतलब whatever steps that government that the state takes in order to enable transparency and accountability will actually result in less of misutilization of funds. और जब जब ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के मेजर्स डाइल्यूटेड होंगे, चाहे वो आरटीआई को आप डाइल्यूट करके करें या फिर लोकपाल की नियुक्ति ना करके, इफ यू आर नॉट अपॉइंटिंग लोकपाल, इन सारे ही केसेस में व्हाट विल हैपन, misutilization of funds will increase because corruption will increase. So students, this is all that we need to do. This is all that we had for this session. हमने इस तरीके से पढ़ा जहां हमने सेवरल वैल्यूज पढ़ी, हमने नोलन कमिटी की वैल्यूज भी पढ़ी, हमने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की रीजंस को भी समझा, हमने मिस यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन के अंतर को भी समझा, हमने वो 3 बेसिक वैल्यूज समझी विच इज नेसेसरी फॉर अ पब्लिक सर्वेंट टू हैव एंड हाउ एग्जैक्टली शुड वी कंस्ट्रक्ट द एग्जांपल्स. हमने ये देखा हाउ एग्जैक्टली डू वी लिंक वैल्यूज इन आवर आंसर्स इन ऑर्डर टू मेक इट इफेक्टिव, मेक इट एन आंसर विच इज एप्ट फॉर एथिक्स. एग्जाम्पल्स की वैल्यूज को समझा मैंने, जगह जगह आपको एग्जाम्पल्स दिए, चाहे वो आपके निर्भया फंड का हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव का हो, और फॉर दैट मैटर जो हम लोगों ने आर्मस्ट्रांग क्वामे या शुभ्रा सक्सेना के एग्जाम्पल को देखा. स्टूडेंट्स, दीज आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स व्हिच मेक्स अप फॉर एन इफेक्टिव आंसर. आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू. For more such videos, please log on to Scholar IAS. डाउनलोड दिस ऐप. हम लोग स्कॉलर आईएएस में इस तरह की इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं जहां हम आपकी जर्नी टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर उसको जितना स्मूथ कर सके. वन मोर थिंग दैट आई वुड सजेस्ट, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स में. जितनी ज्यादा इसकी रीच होगी उतना ज्यादा विल एक्चुअली बी एबल टू हेल्प आउट पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. Students, we have also released analysis of the mains examination and very soon I'll actually be taking lectures on solutions for GS4. Till then, let's say goodbye. आपके मन में जो डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में डालते रहिए. Thank you guys. Thank you.